Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I'm with the part 4th of the previous video, that is personality disorders. Today we will be discussing about the borderline personality disorder, dependent personality disorder, and obsessive compulsive personality disorder. The first one, that is the borderline personality disorder. I can say the borderline personality disorder, the word will indicate you. Actually, it is characterized by the pattern of, very much intense and chaotic relationships, means confused relationships. And he does not, when he comes to an relation with an individual, he's not very clear about the relationship, whether this very relationship will go forward, or what he is expecting from this relationship. So a sort of chaotic relationship, a sort of confused relationship, whether to carry out this relationship or not, and very much intense relationship, and with affective instability, fluctuating attitudes, we can say, towards the other people. Because you have come across the words the mood and the affect, right? Affect, the mood, the inside feelings of a person, right? And the outward expression, that is the affect. That very much affect is वे जो वो अंदर से फील करता है, उसका फिर वो जो अफेक्ट आउट साइड वर्ल्ड जो देखती है, दैट इज अफेक्ट, वो अच्छा नहीं. इफ ही इज खुश है वो अंदर से, फॉर एग्जाम्पल, अब उसको यही खुशी जाहिर करनी है विथ हिज अफेक्ट, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अफेक्ट. लेकिन वो इंस्टेबिलिटी उसमें आ जाती है. द पीपल कैनॉट रिकॉग्नाइज वेदर सच में, अगर इसने बोला ये खुश है, वेदर ही इज़ रियली हैप्पी विद द रिलेशनशिप और विद एनी अदर थिंग्स उसके साथ. दैट मीन्स उसका इफेक्ट इंस्टेबिलिटी ज़रूर रहता है. एंड that is why he has the fluctuating, that is why we can correlate this with that he has the fluctuating attitudes towards the other. At one point he is very good, he is very nice and sober to the persons around him. At the same time, or after some time, he may have the other attitudes, other different sort of attitudes towards the same person. So these type of you can see these type of things in that individual. Basically these borderline personality disorders, they are very much impulsive, right? And their it is very strong, so they are very much impulsive, and they directly and indirectly are self-destructive in nature. They are definitely self-destructive in nature. Here I can also add, if you see the borderline, why it is in the borderline, I'll be discussing in the future also in my upcoming video about this personality a little more. But borderline, here you can say the psychiatrists could not give it the position in psychosis, neither they could give it a position in the neurosis. So it had some sort of characteristics which were at the edge or between the two. That is why it is called as, designated as borderline personality. ना ही इसके characteristics, ना ही आप इस individual को totally साइकोसिस में डाल सकते थे, ना ही इसको आप न्यूरोसिस में डाल सकते हैं. इसके ये एज पे पूरा ही आता था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी जाके इसको बॉर्डर लाइन में पर्सनैलिटी में क्या इसको बोलते हैं डाला गया. और मैंने लगभग थर्ड डीएसएम तक तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था इन द डीएसएम एडिशंस. देन इट गॉट इंक्लूडेड इन दैट. सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, जैसे मैंने बोला, एंड they lack the clear sense of identity. For example, I am Mrs. Bushra Mushta. I know what I am, what are my characteristics, what are my how, what can I do, what are my lacunae. But the person with this, clearly it he does not have the sense of identity. And it is estimated that these percent of the
borderline personality, it is estimated to be about 1 to 2% in the population, and they are more in women, you see, than in the men. So the female ratio is higher to the male ratio, approximately 4 is to 1 ratio आ जाता है फीमेल्स में ज़्यादा ये क्या इसको बोलते हैं पर प्रेवलेंस इसका होता है. See, here is the clinical picture which I have already discussed. Impulsive nature may be because the energy has driven into the id aspect, and he needs the things very immediately. I remember the case in the Imhans, and there was a very small girl with this type of personality, and she wanted something, I don't know what, and she was so impulsive in that thing that she really used the mislanguage with her father, with her mother, with her brother, to get that person there. Yes, he was somebody, and she wanted him to be at that place. So that sort of impulsiveness was there, and as I told you, directly or indirectly self-destructive, and the clear sense of identity is very much lacking in these cases. Now coming to the next, that is the dependent personality disorder. This dependent personality disorder, the word clearly here indicates what sort of personality this must be having. It is characterized by excessive relying on others for emotional support. ठीक है ना, दूसरों पे ये ज़्यादा ही दारमदार होते हैं, पूरे ही क्या उसको बोलते हैं, एक्सेसिवली रिले करते हैं इमोशंस, क्योंकि उनको इफ़ यू आर समटाइम्स यू आर डेफिनेटली इमोशनली वेरी मच डाउन, and sometimes you need the support of your family, peers, and all such things, but in certain cases you need to be very much strong, कि आप clearly क्या इसको बोलते हैं, खुद को ही सपोर्ट करो कि नहीं सिचुएशन में. देयर इज़ नॉट नेसेसरी every time you will get the support of the others, right? In the same way, but these type of the individuals with the dependent personality disorder, they excessively rely on others for the emotional support, we can say. And what is mode of behavior, this mode of behavior uh, is very much evident in the tendency that they allow the others to make their decisions. ये वाला behavior इसी से लगता है कि other can make the decision. If I will say this personality, no, go for this one is correct and this one is not correct, uh, he will do the same, he or she will do the same thing which I will say. That means they for the decision making also, they have the tendency to allow the others to make their decisions. And they, in the reality, they are in the alone, when they are alone, they are very much helpless, very much helpless, and they will act as submissively. Means what submissively, what I can say, for example, they are in the friendship, they are in the relationship, or in the other relationships, they will not say what they want. what other chooses for them, उनके लिए वही ठीक रहता है submissively. ठीक है ना, जो दूसरा बोलेगा हाँ, ये उसमें हाँ मैं हाँ बोले, चाहे इनको वो कितना ही what is called as अच्छा ना लगे, but they will act as submissively. And they are always subordinate to others. ठीक है ना, वो रहना चाहते हैं subordinate to others. They want to give the other person more privileges to take decisions for them. ठीक है, और अगर उनको कोई mistreat भी करेगा, they will act as normal. उनको अच्छा मतलब वो कुछ नहीं वापस बोलेंगे. They will tolerate the mistreatment by the others. एंड उसके साथ साथ वो डीमीन वन सेल्फ को करेंगे, व्हाट दे एक्चुअली आर, व्हाट दे एक्चुअली एग्जिस्ट, उसको डीमीन करके दूसरे को खुश करने के लिए, एक्सेप्टेंस गेन करने के लिए वो डीमीन भी कर सकते हैं खुद को. मीन्स अपने लेवल से कम तर खुद को समझ सकते हैं, राइट? वैसा कुछ करते हैं. एंड टू फेल टू फंक्शन एडुकेटली इन सिचुएशंस जहाँ पे मोर असर्टिवनेस दिखाने की ज़रूरत है या डोमिनेट बिहेवियर दिखाने की ज़रूरत है, वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं. दे कैन नॉट वर्क
or they cannot function adequately in those situations. Assertiveness means ये आपने come across psychiatry में बहुत बार किया होगा this word assertiveness, and it's very strong term. And as a nurse you must have this assertiveness, you know, that putting forward your own feelings, your own values, your own beliefs, but without demeaning or without distracting the rights of the others. अपनी बात को रखना, लेकिन ऐसे रखना कि दूसरे के rights भी violate ना हो. That is called as assertiveness. And जहाँ पे ये वाली situations होती है या dominant type of situations होती है जहाँ पे आपको dominancy दिखानी होती है, ये वाले जो personality है dependent, they fail to work in this type of the situations, ठीक है. And very much common, this type of the dependent personality is very much common, and almost this is very common in women than in men. एंड दिस अगर हम फैमिली की भी बात करेंगे, जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड होता है ना, उसमें हम ये देखते हैं ज़्यादा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी एज कम्पेयर टू द एल्डर चाइल्ड इन द फैमिली. Clinical features or the clinical picture of the dependent personality disorder, the individuals with this type of the personality disorders, they have notable lack of self confidence. You will not see any sort of self confidence in them. और वो आपको किससे लगेगा? That is very much evident from their, आपको कैसे लगेगा that Bushra ma'am is confident or not, or any other person is confident? By my voice, right? By my mannerisms or the posture which I will give you, definitely इसमें lack इन लोगों में lack of self confidence है, and that will be more apparent to you in their posture, in their voice, धीमे से बात करेंगे, mannerism, you know, उनके तरीके से whatever they do the gestures, उनसे पता चलेगा आपको. And they are typically passive because they will, जैसे मैंने already बोला, they will never act as actively, never take the decisions by them, they will act as passively, ठीक है ना. जो दूसरे उनमें करेंगे वो वही करेंगे. And acquiescent to the desires of the others, they will be very happy for the others desires, what they choose for them, and they are good for that, right? And they are overly जनरस नेचर दिखाएंगे वो, ठीक है ना, दूसरे की तरफ, या थॉटफुल, अंडर प्ले करेंगे देयर ओन अट्रैक्टिवनेस. फॉर एग्जांपल दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिवनेस, मैं ये करती, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ, एवरीबडी हैज सम सॉर्ट ऑफ लाइक्स, राइट, या क्या उसको बोलते हैं, ऐसा कुछ अचीवमेंट्स होती है, अट्रैक्टिवनेस, मगर वो अंडर प्ले करेंगे, वो दिखाएंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है ना. अगर उनको पूछेगा भी नहीं वेदर यू हैव टॉप्ड द एग्जाम्स और वेदर शी हैज़ टॉप्ड द एग्जाम, वो उसको अंडर प्ले करेंगे. Some people, for example, I have achieved something, in certain situations I need to show that yes, I am this and my status is this, I have achieved these much of things. But this one personality, they underplay it, they don't show what they have achieved, or what their attractiveness is. ऐसा है होता है. एंड दीज पीपल दे मे अपियर टू द अदर्स दैट वो मतलब दे सी द वर्ल्ड थ्रू द कलर्ड ग्लासेस, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना. सी द वर्ल्ड थ्रू द रोज़ कलर्ड ग्लासेस, मतलब दे डोंट नॉट, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर किसी को उनको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वैसा कुछ नहीं, बस लेकिन असल में वो उस चीज़ को फील करते हैं, ठीक है ना. जब वो अलोन होते हैं वो तब फील करते हैं दैट दे आर पेसिमिस्टिक, डिस्करेजेड, डिजेक्टेड, वो तब फील करते हैं. लेकिन दूसरों को लगेगा कि दे सी द वर्ल्ड थ्रू देयर कलर्ड ग्लासेस एंड ऑल. एंड वो दूसरों को दिखा भी नहीं देते, ना ही अवेयर करते हैं कि ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, कि वो सफ़र हो रहे हैं, ठीक है ना. एंड दिस सफरिंग इज़ डन इन साइलेंस, दे डोंट शो टू द वर्ल्ड दैट दे आर सफरिंग. वो अलोन होते हैं तब वो अपनी सफरिंग्स, ये जो सारा कुछ है ये फील करते हैं. और जो इंडिविजुअल्स विद अ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होते हैं, एज आई टोल्ड यू, दे आर पैसिव इन द रोल, दे आर सबमिसिव इन देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल कपल भी होगा, वो ज़्यादा प्रिविलेज देगा अपने दूसरे कपल को ही कि वही डिसीजन ले, वो चुपचाप जो उसको बोलेगा वो वही करेगी, जो उसके लिए चूज़ करेगा, वो सबमिसिव रोल, ठीक है. एक होता है डोमिनेट, सबमिसिव,
they show the submissive characteristics, and they are willing to let the others to make their important decisions, and to take the relationship, very much. They have the lack of responsibility. They avoid that sort of position जहाँ पे उनको responsibility लेनी चाहिए, क्या उसको बोलते हैं, वो वाली position ही avoid करेंगे, ठीक है ना. और क्या उसको बोलते हैं, because of that they do not have the much confidence to take major decisions in their life. They may hesitately or indiscriminately attempt to establish the relationships with someone. uh, मतलब वो क्या करते हैं, इनमें एक ऐसे पर्सनालिटी होते हैं कि वो क्या उसको बोलते हैं, वो उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो उनको लगेगा ये मुझे नर्चर करेंगे, ये मुझे गाइडेंस करेंगे जो मुझे चाहिए होती है. दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी इज सीन इन द डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. Now there are various predisposing factors, I can say, in these dependent personality disorder persons. uh, अगर हम जेनेटिकली प्रेडिस्पोजिशन की बात करेंगे, दे हैव गॉट दिस थ्रू, जेनेटिकली ये पाया गया है कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी टेम्परेमेंट हो सकता है जेनेटिकल. एंड मेजर ट्विन स्टडीज़ भी हुई है जहाँ पे सबमिसिवनेस को हायर कोरिलेशन बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विन्स पाया गया है देन द फ्रैटर्नल ट्विन्स. एंड साइकोसोशल की अगर बात करेंगे तो डिपेंडेंसी पहले ही फोस्टर होती है इन द इन्फेंसी, ठीक है ना. बिकॉज तभी से स्टिमुलेशन नर्चरिंग एक्सपीरियंस होती है एक इन्फेंट को. मतलब एक इंसान को इन्फेंट में ही नर्चरिंग या स्टिमुलेशन, क्या इसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस होती है. और ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी इन द वेरी बिगनिंग आ सकती है फ्रॉम द, क्या इसको बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेट. एंड इनफैंट हम देखते हैं बिकम्स वेरी मच अटैच्ड टू द वन सोर्स, जो उसको ये नर्चरिंग, जो इसको ये स्टिमुलेशन देगा, ठीक है ना. एंड इफ दिस एक्सक्लूसिव अटैचमेंट कंटिन्यूज एज अ चाइल्ड देन द डिपेंडेंसी इज नर्चर्ड, ठीक है ना. अब अगर प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ये पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिव बन जाता है, एंड डिस्करेज इंडिपेंडेंट बिहेवियर्स ऑन द पार्ट ऑफ द इन्फेंट चाइल्ड. वो उसको इंडिपेंडेंटली कोई काम नहीं करने देता है. तो क्या इसको बोलते हैं, उस टाइम प्रॉब्लम आ जाती है. फिर ये डिपेंडेंट आगे जाके भी बनता है, ये क्या इसको बोलते हैं, ये चाइल्ड ग्रो करता है. पहले तो ठीक होता है क्योंकि इन्फेंट से ही ये डिपेंडेंसी, इन्फेंट तो अभी डिपेंडेंट ही रहता है अपनी मदर फिगर पे, ठीक है ना, या अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि ये बचपन से इन्फेंसी से ही ये वाला सिचुएशन फेस करता है. अब अगर उसको फिर आगे जाके पेरेंट्स ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्ट करे, क्या इसको बोलते हैं, जो उसको इंडिपेंडेंटली काम करना हो बच्चे को, कभी कभी उसको करना देना चाहिए फॉर द इंडिपेंडेंस, लेकिन तब भी वो उसको वो एक्सपीरियंस ना करने दे, डिस्करेज करे, उसकी वजह से ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी फिर आगे जाके बढ़ती है. सो हेयर यू कैन सी द अटैचमेंट्स इन द साइकोसोशल एस्पेक्ट एज वेल. Now, the last one is the obsessive compulsive personality disorder, the very much important personality disorder, I can say, and very much beautiful and very much attractive as well. Actually, the individuals with obsessive compulsive personality disorders, they are very much serious. Yes, formal and have difficulty to express their emotions. They can't. They are very much serious. Serious in the sense you will come to know why they are serious. जब आगे आगे बढ़ेंगे आपको उनकी करेक्टरिस्टिक समझ आएगा, तब आपको समझ आएगा वो फॉर्मली क्यों बिहेव करते हैं, वो इनफॉर्मल क्यों नहीं, वो दे आर नॉट सो मच ऑफ फ्रेंडली इन नेचर, और इमोशंस क्यों नहीं एक्सप्रेस करते. दे ट्राई टू बी वेरी मच स्ट्रांग, एंड दे आर, एंड डेफिनेटली दे आर. अपार्ट जो हमने देखा डिपेंडेंट, वो ट्राई तो करते हैं बट अंदर से वो ये होते हैं, बट ये बिल्कुल भी इन्होंने ठान ली होती है, नो दे हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी केस. तो ऐसा होता है, दे आर ओवरली डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ठीक है ना.
क्योंकि इनका एक प्रीऑक्यूपेशन है दैट दे हैव टू बी मिस्टेक फ्री, दे हैव टू बी एरर फ्री, जिसकी वजह से ये वाला एस्पेक्ट सामने आता है। अब डिसिप्लिन आप देखोगे सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में भी अगर हम बोलेंगे या ओवरऑल प्रोफेशंस की बात करेंगे, डिसिप्लिन आर द रूल्स जहाँ से आपको चलना है, जिन पे आपको चलना है, ठीक है ना। सो टू बी ओवरली डिसिप्लिन दैट दे हैव सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जिनसे हट के वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसी वजह से दे आर वेरी सीरियस। समटाइम्स यू ब्रेक द रूल्स for your own enjoyment, others, or sometimes you have to bend certain rules for the sake of convenience, मगर ये वाली personalities वैसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। They tend to be perfectionist, they tend because they are occupied, as I told you, they are preoccupied with certain rules कि उनको इन्हीं rules के को follow करना है, that is why they are very serious, yes. And they are inflexible about the way they do the things, about the things must be done, या devotion to the productivity to the exclusion of their personal pleasure। मतलब उनको क्या सही लगेगा, प्लेजर कहाँ पे मिलेगा, वो उस बात का ख्याल नहीं रखते हैं, नो। और उसके लिए अपने जो ऑलरेडी सेट वो रूल्स होते हैं कि ये वाला थिंग हमें इस तरीके से करना है, टू डिवोट देयर प्रोडक्टिविटी, वो एक्सक्लूसिवली जाएगा कि दैट दे विल नॉट बी फ्लेक्सिबल। बिल्कुल भी नहीं, अगर ये वाला रास्ता है मुझे इसी रास्ते से जाना है, आई विल नॉट टेक एनी शॉर्टकट, ऐसा होता है उनमें। एंड दे हैव द इंटेंस फेयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, the mistakes which sometimes is very difficult with the decision making, ठीक है ना। अब क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ने डिसीजन लिया, मे बी द डिसीजन समटाइम्स विल नॉट वर्क, ठीक है ना। इसीलिए वो पहले ही बोलते हैं कि मुझे आगे जाके कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा ये डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मेरे रूल्स ब्रेक हो, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है उनको। और the disorder, it is very much common and occurs more often in men than in women, लेकिन हम यहाँ पे कुछ उल्टा ही देखते हैं, but yes it is more often in men sometimes, men sometimes not, in majority of the cases the men are more they tend to be perfectionist as compared to the women. And within the family, if we say, or within the family constellations, it appears to be more in the oldest children, ठीक है। जैसे हमने डिपेंडेंट की बात की थी, वो हमें मिला था यंगेस्ट चाइल्ड में ज़्यादा, और अगर हम ओसीडी की बात करेंगे तो ओल्डेस्ट में, बिकॉज ही वांट्स टू मेक हिज पाथ वे एंड द एवरीबडी शुड फॉलो हिम। उसमें ऐसे कैरेक्टर्स पहले से बिल्टअप होते हैं कि चुचुक जुठू गारे, तो फिर आपके भाई बहन आपको कॉपी करेंगे। तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स शायद पहले से ही डेवलप होते हैं कि उसको गलती नहीं करनी है, उसको परफेक्ट बनना है, उसको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, इसीलिए ये वाला डिसऑर्डर ज़्यादा ओल्डर चिल्ड्रन में पाया जाता है इन द फैमिली कॉन्स्टलेशंस। They will definitely over concern with the details, perfectionist जो मैंने बोला, rigid होता है, inflexible, their own way से अपने तरीके से काम करेंगे, चाहे उनको अपने क्या इसको बोलते हैं what is called as pleasure, personal pleasure, अगर उसमें deviate भी हो जाए उसकी वो परवाह नहीं करते, but they will do the things in their own way। humorless होते हैं, lack of spontaneity, because they are very much concerned if I will talk like this, कहीं ये गलत तो नहीं होगा, कहीं ये रूल्स के खिलाफ तो नहीं होगा, कहीं मतलब सॉर्ट ऑफ एरर तो नहीं होगा, तो वो लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो जाती है। इन डिसीजन दे कांट टेक द डिसीजंस करेक्टली बिकॉज दे विल थिंक दैट वेदर दिस डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, हेजिटेंट हो जाएंगे वो डेफिनेटली। एंड दे हैव वेरी फ्यू लेजर एक्टिविटीज, दे कैन नॉट रिएक्ट, दे आर ऑन द टोज टू डू द सर्टन थिंग्स। क्योंकि आप आगे जाके जब डिटेल में हम देखेंगे तो हम देखते हैं ये वाली पर्सनैलिटीज़ को
ऑब्सेशंस आती रहती है, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, जिसकी वजह से दे डोंट गिव वेरी मच टाइम टू देयर लेजर एक्टिविटीज़ जो उनको देना चाहिए फॉर रिलैक्सेशन एंड ऑल। नो, दे टेंड टू कवर ऑल द थिंग्स एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है ना। जो ओ सी डी, मतलब बार बार काम करना या क्लीननेस की तरफ जाना, दी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, that is a different topic. And they hoard money and objects, yes. Hoarding, that is jama karna, theek hai na. Some sort of personalities in the OCD have been seen, yes, they have the hoarding behavior. वो जमा करते हैं चीज़ों को, sometimes their dolls, और कभी कभी अगर उस पे जाएं तो पॉलीथिन्स, मतलब अगर हम लीस्ट पे जाए पॉलीथिन या कुछ भी, उनको कुछ फॉर एग्जांपल गिफ्ट निकलता है किसमें, वो उसका बटन भी संभाल के रखेंगे, एट दैट सॉर्ट ऑफ हार्डरिंग इज देयर, एंड दे आर इमोशनली कंस्ट्रक्टेड as compared to the other personalities. Clinical picture of these personalities, the OCD personalities. Basically, the individuals with this obsessive compulsive personality disorders, they are inflexible, as I told you, they lack the spontaneity, and they are this meticulous. They show the great attention, towards the work, and they are they work diligently and patently at any task जो भी उनको देंगे, accuracy gain करने के लिए वो meticulously work करेंगे, diligently work करेंगे, ताकि वो चीज़ accurately हो और discipline के साथ हो. They are especially concerned with the matters of organization, efficiency. They tend to be rigid and bending. जैसे मैंने बोला, वो बैंड नहीं होंगे अबाउट द रूल्स या प्रोसीजर्स जो भी होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे, वो बिल्कुल रिजिड रहेंगे, अनबेंडिंग रहेंगे, और ज़्यादा वो किस पे कंसंट्रेट, वो वैसे वाले मैटर्स लेंगे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ. उसमें सोशल बिहेवियर अगर इनमें देखेंगे, दे टेंड टू बी वेरी मच पोलाइट एंड फॉर्मल, है ना, मतलब डिसेंसी दिखाएंगे वो. दे आर वेरी मच रैंक कॉन्शियस ऑल्सो, रैंक कॉन्शियस. For example, perfectionist होंगे, so he will be better on the top position as well. That's why he is very much rank conscious कि next time ये रैंक बराबर रहनी चाहिए, ठीक है ना. तो उनको ये नहीं बर्दाश्त होगा कि दूसरे टाइम वो सेकंड आ जाए किसी भी तरीके से. वो उनमें कैरेक्टरिस्टिक रहता है. एंड उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सुपीरियर्स, या मतलब वो डिफरेंट रोल्स प्ले करेंगे इन फ्रंट ऑफ द superiors and in front of the inferiors. Definitely in front of the inferiors they will tend to show their personality अच्छे से, ठीक है ना. और और superiors के सामने they tend to be very much solitary, मतलब interests दिखाएंगे, concern दिखाएंगे, ठीक है ना. किन के सामने अथॉरिटी फिगर जो होंगी, ताकि अप्रूवल गेन हो, ठीक है, ताकि वो उनको अप्रूव कर सकते, वह सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है. या these personalities, compulsive personalities, they become very much autocratic sometimes in nature, yes. क्योंकि रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऑटोक्रेटिक पर्सनालिटी जब बनेगी तो डेफिनेटली वो थोड़ी ना बैंड हो जाएगी, तो वो वाली पर्सनैलिटीज़ बन सकती है. And they are appearing very much pompous, means self importance देंगे, self righteous हो जाएंगे, ऐसे sort of personalities होती है ये. And the people with this obsessive compulsive personality disorder, they are typically bureaucratic personalities, because इसलिए उनको शायद कंपनी मैन भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंडेबल तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है ना. एंड क्या इसको बोलते हैं, वो हमेशा अथॉरिटी फिगर रहना चाहते हैं. दैट्स वाई दे टेंड टू बी द bureaucratic personalities in any way. एंड मगर इमोशनल बिहेवियर अगर हम बात करेंगे, तो क्या इसको बोलते हैं, कुछ हद तक वो इमैच्योर या इरेस्पॉन्सिबल इमोशनली हो सकते हैं, ठीक है. बिकॉज टू शो द थिंग्स दैट दे आर परफेक्ट, समटाइम्स द इमोशंस
कांट कोइंसाइड विद दैट, ठीक है ना। इमोशनली आप समटाइम्स उतना रिजिड नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये कभी कभी इमोशनल बिहेवियर उनका इमैच्योर या इरेस्पॉन्सिबल आ सकता है, ठीक है। वो ये सब हो सकते हैं। ऑल्दो सरफेस से भी हमें लगेगा दे आर वेरी मच काम कंट्रोल्ड एंड वो सब होते हैं, एंड they use mostly the defense mechanisms, जैसे कि every individual has its own defense mechanism। जैसे कोई गलती होता है मैं किसी और पे प्रोजेक्ट करूँगी, राइट। तो इनका भी है mechanism of reaction formation। अगर उनको कुछ हुआ they have the dares to react abruptly, नहीं मैंने ये सब नहीं किया, ठीक है। ऐसे सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़ आपको मिलेंगी ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पर्सनैलिटी। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, अगर हम साइको एनालिटिकल वे की बात करेंगे, पेरेंटिंग स्टाइल एक इंडिविजुअल में डेवलप कर सकता है दीज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो ये उधर बिकॉज ऑफ द ओवर कंट्रोल नेचर, ठीक है ना। ओवर इम्पोजिशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, कि नहीं बेटा आपको बचपन में ही आपको इस स्टैंडर्ड से चलना है, आपको ये करना है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है। दूसरी चीज़ें कंडेम करना, अगर बच्चा करना भी चाहिए तो अगर पहले से ही रेजिंग में ऐसे वाले रूल्स ओवर कंट्रोल बिहेवियर हो पेरेंट्स का, तो डेफिनेटली बच्चा आगे जाके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन सकता है, ठीक है ना। एंड ही विल ऑलवेज यू नो ही अगर उसको पहले से ही प्रेज मिला हो फॉर द पॉजिटिव बिहेवियर्स, ठीक है, विच इज़ बेस्टोड ऑन द चाइल्ड, क्या इसको बोलते हैं पनिशमेंट्स फॉर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, तो इसको बोलते हैं उस एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल बन ही जाता है, यू नो, एक्सपर्ट इन लर्निंग दैट दे मस्ट डू नॉट टू डू द दिस अवॉइड पनिशमेंट्स। अवॉइड पनिशमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो वही चीज़ें करते हैं जो रूल्स के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। क्यों? ताकि उनको अटेंशन मिले, प्रेज मिले, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिले, ठीक है ना। फॉर ग्रांटेड कोई उनको ना ले, तो और अपने पेरेंट्स की नॉलेज में आने के लिए वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके ये वाली पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। Thank you. This was all about the personality disorders. I will be with you with the part fifth of this video, which is very important. I can say very important video. Inshallah Taala next time. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.